Hello, friends. So, so today uh, I'm going to discuss about few things. So, बहुत सारे reviews ऐसे सुने हैं like we are not supposed to buy Royal Enfields on as they are not reliable and God knows for whatsoever reason. But ऐसा क्यों है? I mean I know that many people have faced a lot of issues with Royal Enfields before or during the trip also. बट मैं अपना कुछ आई मीन मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगा तो why not let's begin with the what and all I did with this bike. So recently I just came back from my Sikkim and Bhutan trip. So I by the way I use a Royal Enfield Thunderbird 350 which is of 2008 model, which is the लगभग first batch of the UC engines. So so I know the bullets in those days was like good. Many people might disagree, but चलो मैं सोचा कि ये वीडियो में बना ही लेता हूँ कि like what all things which I liked about my bike and what all things which I didn't like about my bike. So first things first, what I liked about my bike. So being a 350, understandably इतना power उसमें होगा नहीं, like if you are expecting a 500 cc power or if you are expecting a bike which can do around 100 120, तो वो bike तो ये है नहीं, ठीक है. तो why not, मैं सोचा कि let's make it a gentleman's ride. तो I stuck on to the limits of the bike. I never ever exceeded 90 kph during my entire trip. बहुत से लोग बोलेंगे कि ये बहुत बोरिंग राइडर है, लेजी राइडर है. हाँ, मैं हूँ, क्योंकि आई वांट टू एंजॉय द व्यू एंड आई वांट टू एंजॉय माय राइडिंग इन दोज सेक्शंस ऑफ द रोड. तो जैसे कि मान लो नाथुला ले लो, सिक्किम का कोई भी हिस्सा ले लीजिए आप, वो वहाँ पे देखने लायक जगह है वो. तो वहाँ पे ऐसे जाके वी आर नॉट ऑन अ रेस ट्रैक ऑन दैट. सो अंडरस्टैंडेबली वी हैव टू राइड स्लो एंड एंजॉय द ब्यूटी. लेकिन खैर, तो वो तो अलग बात हो गई. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बाइक ने मेरे साथ कुछ भी धोखा नहीं दिया मेरे को. एंड नॉट इवन इट डिडंट बिट्रे मी अ सिंगल एट इवन अ सिंगल इंस्टेंस, not even a single puncture on the bike. So the entire trip went smooth, not even a slightest of the glitch. The bike started as usual. मॉर्निंग पे कभी अर्ली मॉर्निंग पे डर होता था कि लाइक वेदर इट विल स्टार्ट और नॉट, क्योंकि इतना 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 मैंने इतना ठंड है उधर, तो इतनी कोल्ड स्टार्ट होगी कि नहीं होगी. तो नो इश्यूज एट ऑल. गियर बॉक्स वॉज फाइन, परफेक्ट. द चेन, द ओनली थिंग विच आई टुक, I took a lot of spares based on the reviews which I had on the internet about the engines and all. But trust me, not even a single spare I used. The only thing which I used in this trip and which was there in the spare section of my luggage for the bike was the chain lube. So what I did was that every 200 kilometers or जहाँ कहीं भी रुकता था तो ब्रेकफास्ट या जो भी है, तो आई यूज टू काइंड ऑफ lube my chain once and make sure that सारे से कुछ ठीक है. और बाइक 2 बार वॉश हुआ मेरा इस ट्रिप में. बहुत मट्टी गिट्टी था, तो लाइक आई थॉट के लेट्स गिव इट अ बाथ. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट इवन अ सिंगल इश्यूज व्हाटसोएवर. क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल मैंने डुअल लगा रखे थे, स्टैंड बाई एक था. स्पार्क प्लग्स आई वाज कैरिंग. आई कैरिड अराउंड सम फ्यूजेस, इतने नंबर्स तो याद नहीं है मेरे को. तो एंड आई कैरिड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 चेन लिंक्स मेरे साथ था. 10 चेन लिंक्स था मेरे साथ. 2 स्पार्क प्लग थे, हेडलैम्प थे. तो अभी वो सारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो गया. तो लाइक आई एक भी यूज़ नहीं हुआ. तो एवरीथिंग वाज फाइन. इवन आई वाज कैरिंग अ मल्टीमीटर विद मी टू चेक एंड आई यूज्ड टू चेक द बैटरी वोल्टेजेस हियर एंड देयर, क्योंकि मेरी बैटरी बहुत पुरानी थी. तो लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट अ 2-year old बैटरी. तो विच लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड के रिप्लेस कर ले. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वोल्टेज सही दे रहा है तो रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत है. तो मैंने कुछ नहीं किया. बैटरी की भी कोई इशू नहीं आई. Tires, I had changed the tires to from the front one is a Michelin Slack Street, the rear one is a MRF Mo grip. So which I thought कि एक थोड़ा बटन टायर्स लगा लेता हूँ, क्योंकि ग्रिप थोड़े अच्छे मिलेंगे. ट्रस्ट मी, अमेजिंग जॉब. तो
मेरे स्टॉक जो टायर्स थे, तो लाइक आई यूज दोज फॉर अबाउट 40,000 किलोमीटर्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को, एक भी पंक्चर नहीं हुआ था। तो टच वुड, अभी तो कुछ वुड नहीं है, तो खैर आई टच माई सेल्फ एंड से दैट कि कोई भी दिस बाइक इज अ 10-year-old बाइक, ऑलमोस्ट 10 years old बाइक, एक भी पंक्चर नहीं था इसमें। तो जो कि वॉज अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट। इलेक्ट्रिकल, हाँ, वन थिंग आई डिड एंड विच आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू इज दैट जब भी आपके आपके आई चेंज द वायरिंग किट ऑफ माई बाइक बिफोर आई स्टार्टेड ऑन दिस ट्रिप। So like in 10 years I had changed it only once. So no other. The auxiliary lamps I have on my bike, and there was one more additional fitment which I did was to make the connection for the hazards. उसके सिवा everything is running on stock, even on the stock silencers as well. So बाइक को सही रखेंगे, राइड अगर आप सेफली राइड करोगे तो बाइक भी साथ देगी। तो मेरे ख्याल से मेरा to all my subscribers I want to spread out only one message: brand को खोजने के वजह if we start thinking on how we ride and respect the machine in its ideal conditions, I think it will be better. तो आप जो भी करें, ride safe, keep the bikes to the limit, because these are, after all, these are designed by the humans for a particular riding condition. आप हार्ले लेके रॉयल एनफील्ड की तरह राइड करोगे तो हो गई। सिमिलरली रॉयल एनफील्ड लेके आप डुकाटी एक्सपेक्ट करोगे परफॉर्मेंस तो हो गई। तो ऐसा राइड नहीं करना। हाँ, हालांकि नए सीरीज में बहुत सारे इश्यूज हैं, बट फिर भी वी शुड पास ऑन दोज फीडबैक एंड हेल्प द ब्रांड ग्रो। आफ्टर ऑल इट्स अ इंडियन ब्रांड एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। एंड हम लोग अच्छे राइड करेंगे तो आई नो दैट दिस मशीन इज केपेबल इनफ टू टेक अस टू places that we can't even imagine. So coming back to the suspension and all, everything is fine. तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे। I thought कि बहुत सारे इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उधर, तो मैं सोचा था कि क्या ये तो मेरा फॉग सील वगैरह सब कुछ क्या होगा, तो फॉग ऑयल विल बी लीकिंग एंड ऑल। ट्रस्ट मी, इतने सारे बॉटल्स की वजह से भी there is not even a single complaint about the shocks. And with that amount of luggage at around 60 speed, 60 or 70 के करीब, if you hit a pothole, that means you are gone. But trust me, कुछ भी नहीं हुआ। खैर, anyways, so what I wanted to bring out is that ब्रांड को कोसिए मत, जो भी करना है खुद से करो, दिल से करो, ठीक है। बाइक को अपने तरह रखो, बाइक भी तुम्हें अपने तरह रखेगी। With that message, I would request each one of you to ride safe and ride for pleasure and fun. Make sure that you have somebody else in your family waiting for you. Think about them and ride. Don't make your passion a very painful experience for your family members or somebody who cares for you. Thank you. Bye bye.